Hello and welcome to Knowledgist. In this live edition, we will be discussing about the LIC IPO, the much talked about IPO in India, the LIC IPO. It is good or bad? We will make a fair analysis on that. But before that, my kind request to everyone here is to subscribe to the channel. And at the end, I will also be answering your specific questions regarding LIC IPO. So you can put your questions on comment section and I will be answering them, all of them in at the end of the session, end of the video. आज के शो में हम बात करेंगे LIC IPO के बारे में और ये शो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। और उससे इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, मेरा विनम्र निवेदन आप सबसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं, क्लासेस रन करते हैं और वी आर इंडियाज नंबर 1 बैंकिंग प्लेटफॉर्म इन लैटरल एंट्री सेगमेंट। सो वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। LIC IPO जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, अपोज भी हो रहा है LIC यूनियन की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से, कुछ इन्वेस्टर्स की तरफ से और कुछ पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से, और कहीं कहीं जो market advisors and they are welcoming this move. So we will look into it whether it is good for public or not, whether it is good for the employees of LIC or not, क्योंकि जब IPO की बात होती है तब एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में बहुत कम डिस्कशन होता है, क्योंकि सब मार्केट में पैसा देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं और IPO आने से मार्केट को कितना फायदा होगा वो देखते हैं, मगर एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर को फायदा होगा या नुकसान हम ये शो में बात करेंगे। एवरीवन लुक्स इनटू द एंगल ऑफ market reaction, but none of them looks into the policy holders reaction and the employee reaction. So we will discuss all that in this edition. Before that, once again I would urge all of you to kindly subscribe to Knowledgist. चलिए हम बात करते हैं LIC IPO, good or bad, on the perspective of employee, investor, market investors, traders and the policy holders point of view. Okay, so सब्सक्राइब के साथ एक ज्वाइन बटन भी अवेलेबल है चैनल में। अगर आप ज्वाइन में क्लिक करते हैं, there are so many facilities. You will be getting all the PDFs including this class and monthly banking PDFs etc. So if you like, do subscribe and do join. मगर सब्सक्राइब करें और शेयर, चैनल लिंक को शेयर करना ना भूलिए। हम यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस में एम्प्लॉय रिलेटेड इश्यूज भी उठाते हैं और बैंकिंग में आप सबको एडुकेट भी करते हैं, तो आप सबका प्यार हमें चाहिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज IPO? IPO होता क्या है? IPO इज व्हेन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। जब पहली बार कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करता है उसे IPO बोलते हैं। जब पब्लिक हिस्सेदारी के लिए एक कंपनी अपने शेयर्स खोल देता है उसको IPO कहते हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर ट्रेड होते हैं, जब पहली बार ये ट्रेडिंग होने के लिए मार्केट में छोड़ा जाता है उसी को ही IPO बोलते हैं। When for the first time shares are introduced to the market, it is called initial public offering in simple words. In a different session, I will be taking a complete class on IPOs, but as of now, you must remember it is for the first time when the companies offer their shares to the general public for subscription. Okay, and they issue it just to raise money and for greater participation. Okay, so what is the current news about LIC IPO? In the budget, Nirmala Sitharaman, the finance minister, has announced on her budget speech about the government's willingness to partake the shares of LIC. Besides LIC, government is looking to sell the remaining stake in IDBI Bank and into general insurance companies as well. So a little bit about LIC before I go to the boon or bane of LIC IPO. Just have a simple view of the position of LIC. हम पहले LIC की पोजीशन के बारे में जानेंगे, IPO के बारे में जानेंगे और सीधा बात करेंगे क्यों ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, so about LIC is LIC is a statutory body established an act of parliament in the Life Insurance Corporation Act 1956. Okay, so LIC Act का 1956 में एक प्रोविजन है
the section 37 of LIC Act 1956, which gives a sovereign guarantee to the LIC policy holders. ठीक है, LIC एक्ट 1956 में एक ऐसा प्रोविजन है सेक्शन 37 के अंदर जो इसे बाकी इंश्योरर से अलग करता है, बाकी इंश्योरेंस कंपनियों से अलग करता है। वो है सोवरेन गारंटी जो इसके पॉलिसी होल्डर को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का गारंटी, गवर्नमेंट ये गारंटी देता है कि अगर LIC डूब भी जाए, LIC को बेच भी दिया जाए, LIC डूब जाए, LIC बैंकरप्ट हो जाए, फिर भी जो वर्डिंग्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यूज किया गया है, जो बोनस देने की वादा किया गया है, जो सम अश्योर्ड देने की वादा किया गया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगा। तो ये जो प्रोविजन है वो LIC को यूनिक बनाता है, इसीलिए लोगों का इतना भरोसा LIC के ऊपर होता है। अगर ये प्राइवेटाइज होता है, अगर ये IPO के रूट, अगर इनिशियली तो प्राइवेटाइज नहीं होगा, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक पहला कदम है। अगर इसमें IPO आ जाता है तो क्या ये गारंटी, ये सोवरेन गारंटी, ये गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी, ये जानना जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद क्या LIC के ऊपर लोगों का भरोसा कायम रहेगा इवन आफ्टर the IPO stake sale in LIC? Will there be the similar guarantee provided by the government, or people have similar faith on LIC or not? That is the point of discussion here. Okay, it is consolidated the business of 245 life insurance companies at that time. It is headquartered at Mumbai. Its total asset is 31 trillion and total NPA is 30,000 crore because it is forced to invest in many sick companies by the government. Okay, so LIC IPO, it is a much awaited blockbuster IPO. LIC potential India's biggest ever, could turn out to be much bigger as expected. It is going to be world's biggest IPO. Okay, so government decides, even government is decided to sell 25% of its stake, and initially they will sell up to 10%, and in different 2-3 tranches they will sell the remaining stake. Okay, the government is expected to raise 90,000 crore from an IPO in LIC and through the stake sale in IDBI. I think all of you know that they are raising the disinvestment target from the stake sale in LIC. Government is having a huge shortfall owing to the COVID-19 in their budgetary deficit. So they are looking to sell the stake to match their fiscal deficit. Okay, so compared with China's Alibaba and Saudi Arabia's Aramco IPO, this is going to be one of the biggest IPO in the world. And after it is being listed in the markets, it will overtake the market valuation of Reliance Limited and TCS. Okay, तो ये तो कुछ स्टैट्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि LIC की IPO क्यों बड़ा होने वाला है। ठीक है, the IPO is likely to fetch a huge premium as LIC currently has a small equity base. Okay, तो डिले हो रहा है क्योंकि there are some people are opposing it. The timing of LIC IPO could depend upon the market conditions. गवर्नमेंट तभी LIC का IPO बेचेगा जब मार्केट में वैल्यूएशंस अच्छा होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली पैसा चाहिए, और वो तभी सेल करेगा जब conditions and atmosphere will be in favor of a IPO. Okay, the IPO is expected to hit in the third quarter of this fiscal year. में ये आ सकता है, तो probably maybe by December it will hit the markets. Okay, LIC was set up under a special act in 1956. Why it is delayed? So hence, to introduce an IPO, there are some amendments required. What are the amendments required? Amendments to the LIC Act 1956. LIC is not a company under the Companies Act, but it is a statutory body incorporated under LIC Act 1956. So if it would have been a company under Companies Act 1956 or 2013, then it would have been raising the IPO all of a sudden. But for that, government needs to introduce a bill in Lok Sabha, and they have to pass it subsequently. Okay, so there is an amendment required. So this is the basic hurdle. But the government that can do away with Article 35A, etc. in Kashmir, they can do with anytime they can do with this LIC. Okay.
So what is why LIC is altogether apart from all the other insurers? Because it has this sovereign guarantee. Government wants 100% stake, and people have a lot of faith on LIC than other insurance company. Okay, so there are listing formalities that I will come and explain you in a separate session on IPO. For that, my kind request to you, please stay subscribed. LIC का फाइनेंशियल नंबर्स इतना जरूरी यहाँ पे नहीं है, मगर आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल numbers हैं और कुछ NPA figures that is worrying, but this is due to government has pressurized LIC to buy stakes in SIC companies. Okay, and valuation and price, जो LIC का stake होने वाला, जो शेयर होने वाला है, it will remain around 400 to 600, मगर maybe listing will be in premium because of the hue and cry about LIC shares. Okay, तो ये था IPO के बारे में. And yes, there is a complexity in valuation because it's a very big company, and the valuation of LIC could be very complex. This is a 65-year-old trusted Indian company, and it has been part of India's growth story for last 65 years. So इसका कॉम्प्लेक्सन, इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है गवर्नमेंट के लिए. ओके, सो यस, हाँ, the arrangement would make a downward revision of LIC's valuation. अगर IPO देना है तो LIC के वैल्यूएशन को डाउनग्रेड भी करना पड़ सकता है. ठीक है, तो यस, बेनिफिट्स ऑफ LIC गोइंग पब्लिक. पहले बेनिफिट बताते हैं, फिर ये क्यों, व्हाई आई एम नॉट ओके विथ LIC स्टेक सेल, आई विल आल्सो टेल यू दैट. पहले बेनिफिट्स, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स आर इन फेवर ऑफ LIC स्टेक सेल. मार्केट प्लेयर्स आर अवेटिंग दिस stake sale in LIC. So for that, government is under big pressure. The government is hoping LIC IPO will help plug a burgeoning budget gap, an increasing budget gap, which has further widened because of the coronavirus outbreak. The government is keen on market borrowings to arrest the sharp slump in revenues due to the nationwide lockdown. The LIC stake sale is expected to play a starring role in this strategy. Listing companies in stock exchange disciplines a company and provides access to financial markets and unlocks its value. So ये तो हर एक कंपनी के लिए कहा जाता है कि अगर ये शेयर मार्केट्स में लिस्टेड होंगे तो सेबी के नॉर्म के अंदर उनको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी शो करना होगा. तो मे बी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉर इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन LIC, क्योंकि LIC के जो डिसीजंस हैं वो ज़्यादा पब्लिक नहीं होता है, बी इट रिक्रूटमेंट, बी इट एनीथिंग, वो बी इट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एटसेट्रा. तो अगर ये लिस्टेड होंगे तो they have to comply with many laws and many regulations, so there will be a transparency in governance, right? LIC will also come on SEBI's direct watch and will have to comply with requirements meant to further listed firms. Government's influence on its asset management will reduce because sometimes government directs LIC to buy this stake in IDBI, in other SIC companies. So that reliance on government will be reduced and LIC can take its own decisions. It will increase the efficiency and deliver higher returns for the policyholders. Okay, and SEBI is also relaxing the norms for LIC IPO. So why the earlier governments have not done so? इससे पहले ये गवर्नमेंट से पहले के गवर्नमेंट्स इसको क्यों बेचने के लिए सोचे नहीं थे? Why they have not thought of selling stakes in LIC? LIC has been used as an investor's last resort in the past to support the market by buying shares of state-run companies. तो LIC को जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is treated as the last resort of the banks of the government. So similarly, LIC has played a long role in buying the stakes of SIC companies, investing on behalf of the government. Okay, and saving the companies being wind up. कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया है LIC ने, कंपनी बंद होने से बचाया है, गवर्नमेंट के बिहाफ में LIC ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है. इट ऑल्सो बॉट द शेयर्स ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज ड्यूरिंग डिसइन्वेस्टमेंट के टाइम में इसने गवर्नमेंट कंपनियों का शेयर खरीदा है, जबकि जिस टाइम पर मार्केट में कोई भी
उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए रेडी नहीं थे, तभी LIC आके शेयर खरीद के गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट LIC का NPA रेट आज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। LIC bought $1.4 billion IPO in ONGC in 2015. It is also called the bailout of IDBI Bank, which is severely hit because of the bad loans. LIC invests rupees 55,000 to 65,000 crore in stock market every year and emerges as the largest investor in Indian stocks. और जिसके वजह से स्टॉक मार्केट बचा हुआ है, क्योंकि जो सडन आउटफ्लो होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, तब उसी टाइम पर LIC इन्वेस्ट करके मार्केट को क्रैश होने से भी बचाता है। ठीक है, इन फिस्कल ईयर 19 LIC इन्वेस्टेड a total whopping amount of 68,620 crore in the equity markets in India. It provides funding to many infrastructure projects of rupees 3,76,097 crore as of मार्च 2018। ये कुछ ऐसे स्टार्ट्स हैं जिसके लिए अर्लियर गवर्नमेंट्स इसको बेचे नहीं थे, क्योंकि किसी भी वक्त गवर्नमेंट का बैंकर के हिसाब से जैसे RBI काम करता है, वैसे LIC भी बहुत ज्यादा काम किया है। गवर्नमेंट के जो साख को बचाने के लिए LIC का योगदान बहुत ही बड़ा है। तो इसीलिए, और वो तब आके मार्केट को रेस्क्यू करता है जब मार्केट क्रैश होने की स्थिति में आ जाता है। ये किस लिए करता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। ठीक है, why it is not okay? Why it is not okay? This is the tagline that I run. Why it is not okay to sell the stake in LIC? IMF recommendation. What IMF say in International Monetary Fund? What it says? IMF in April 2018 has asked the Indian government to remove the explicit sovereign guarantee on every LIC policy and convert LIC into a company. देखिए, आज डॉलर का प्राइस इंडियन रुपी के मुकाबले क्यों इतना ज्यादा है? बिकॉज इंडिया हैज टू गो फॉर ए लोन विथ IMF की बस चले जो जिसी भी उसके मेंबर नेशन और उसके जो बोरोवर्स हैं उनकी इकोनॉमी को वो खोखला बना देता है, ताकि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस उसमें आ सके। ठीक है, तो जब India has taken a loan from IMF for the bailout in the 1992 crisis, they have made a condition, the IMF has made a condition to devalue the Indian currency. तो ये IMF का रिकमेंडेशन था कि आप सोवरेन गारंटी हटा दीजिए, जो गवर्नमेंट का गारंटी है हटा दीजिए और LIC को कंपनी बना दीजिए, क्योंकि बाकी देशों में ये होता नहीं है और इसी के वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास है तो LIC के पास आज है। ठीक है, इफ सोवरेन गारंटी विल बी रिमूव्ड, LIC will lost its value and customer base, so the profit will be reduced and the NPA will increase। अगर ये हटा दिया जाता है, क्योंकि भारत में सब कुछ पैसे से नहीं चलता है, कुछ चीजें भरोसे के बलबूते पर भी चलता है। ठीक है, इन इंडिया एवरीथिंग डोंट रन विथ मनी, समटाइम्स इट रन विथ ट्रस्ट। And yes, the LIC is world's one of the biggest companies because the Indians put their hard-earned money into LIC. Not only their hard-earned money, but their hard-earned trust into this one company. And in return, this mayor government assures us that your money is safe. Only this much of assurance gives us feel that LIC is one of our partners in our growth story. Though LIC provides less interest rate in our investments, though LIC policies are higher, the premiums are higher than other private insurance companies, but still Indians do invest in a very large amount in LIC. So all merger and listing of general insurance companies have not completed yet. So the LIC stake sale will add more complications. Government will also have to deal with employees union and political forces. Yes, employee के बारे में कोई सोचता नहीं है यहाँ पे। देखिए, अभी 25% स्टेक सेल करने पर उतना ज्यादा असर नहीं होगा एम्प्लॉइज के ऊपर, बट ये 25% आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये तो इनिशियल टारगेट्स है। गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट का ये पहला सोपान है, ये पहला कदम है।
ठीक है। इसके बाद भी बजटरी डिफिसिट चाहेंगे, इसके बाद भी गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स होंगे, तो इसके बाद अगर होता है तो एम्प्लॉइज विल सफर। देखिए, there is a two different things. Life in a private insurance company is complete hell. Life in a private, you go and ask to any private insurance company, like it's better to be a farmer, it's better to work as a daily wage laborer than to work in a private insurance company. If things go that ugly in life insurance companies, then the life of these insurance employees will also go to hell, because like IDBI people were part of the PSU banks, but now they are being turned to be the private ones. So similarly, the fate of LIC employees will go the same way. ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत आ सकता है। और उसके बाद ये होने पर क्या असर होगा पब्लिक को, पॉलिसी होल्डर को क्या होगा, मिस सेलिंग। अपने टारगेट पूरा करने के लिए अपने प्रेशर को झेलते हुए ये सेम एम्प्लॉय अपने नौकरी बचाने के लिए मिस सेलिंग करना शुरू कर दें। ये जनरल टेंडेंसी है। अगर आपको ऊपर से प्रेशर है, आपके गनपट्टी पर बंदूक रख दिया जाए तो आप तो वही करेंगे जो बाकी इंश्योरेंस कंपनी वाले करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बैड। ओके, सो मैं इसके ऊपर अगर इस वीडियो में अच्छा रिएक्शंस आता है तो आई विल गो ऑन ए सेपरेट वीडियो व्हाट विल बी द explicit impact of LIC's stake sale on employees and on policyholders. I am just testing it because I have made so many videos for banks and they were extremely popular. So, but I just wanted to raise this issue by I was asked by many of my LIC students, LIC viewers. So I just wanted to take this as an example. But if you love it, then I promise you I will come up with more videos like this and we will put a bigger influence to the government. Okay, in today's scenario, the government has used LIC to buy shares of falling market to jack up the index, but this will not be possible in the future once the IPO is issued. क्योंकि अगर IPO आ जाएगा, ये कंपनी बन जाएगा और कंपनी बनने पर ये क्यों शेयर मार्केट को बचाएगा, ये क्यों किसी सिक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, क्यों देश के लिए काम करेगा। ठीक है, also it may lose the domestic systemically important insurer tag. As a result, LIC, which used to be a cash-rich institution, will make huge losses, and then another sick institution may have added to the government's list. Now it is funding various government social schemes at a nominal rate of interest. This will not be possible once the IPO is being issued. तो ये था इस एडिशन में। धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। प्लीज शेयर इट मैक्स। आई वांट दिस टू रीच टू एवरी सिंगल पॉलिसी होल्डर, एवरी सिंगल एम्प्लॉय ऑफ LIC, so that we will make a watch. And I will, because in this edition I have remained apolitical. I have not attacked anyone, but if you give your feedbacks, we will shift to angle. We will try to find out what is the real issue, why this LIC IPO is coming, and who are going to be benefited out of this stake sale, and who are going to be hampered, whose interests are going to be hampered by this stake sale. तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। Yes, Sarang, I am also talking in English. Yes. So thank you for watching us. Do share and subscribe. Do share and subscribe. This is my humble submission to everyone watching the video. Thank you, everyone.